Hello everyone, welcome to Object Oriented Programming. Now in Object Oriented Programming, we are going to start another type of inheritance, that is hybrid inheritance. Now first of all, what is hybrid inheritance? There could be situation where we need to apply two or more types of inheritance to design a program. It means we can include two or more type of inheritance in a single program, and this type of inheritance is called as hybrid inheritance. Now suppose here class B is derived from class A, and from class B there is another derived class, that is class D. So these three class A, B and D include multi-level inheritance, and of course if we consider these three class, then this type of inheritance is called as multiple inheritance, right? Same here, these A, B and D class include multi-level inheritance, and this class include class B, class C and class D include multiple inheritance. So this type of inheritance in which we can include two or more types of inheritance, this type of inheritance is called as hybrid inheritance. Now let me explain one example of hybrid inheritance. For example, there is a class student, in that two types of protected data members, that is integer roll number and character name. It stores the roll number and name of particular student. And of course there are two public member function, get data and put data. Get data is used to accept the value of student information, that is roll number and name, and put data function is used to display the student information, and that information include roll number and name. Now from this student class derived another class name is score. In that used two data member, protected data member, that is mark 1 and mark 2. It means this class accept the marks of a particular student, marks of two subject of a particular student. Now here two member function, public member functions are get marks and put marks. Get marks function is used to accept the value of mark 1, mark 2, and put mark function is used to display the value of both the mark. Now from this score we can derive another class result, and this student score and result class include multi-level inheritance. But here is another class sport. Now in that one protected data member, integer sub, that include now marks of a sport. Now get sport and put sport function is used, public member function है ये दोनों. Get sport is used to accept the sport marks, and put sport is used to display the marks of sport. Now here class score and class sport act as base class, and from these two base class we can derive another class, and that is class result. In that two protected or private data members are total and percentage, and in display we can find total and percentage and display all the details of student, that includes student roll number, name, mark 1, mark 2, sub, total, percentage, etc. Right? So here I am going to explain this program in Turbo C. Now first of all you have to write header file, that is iostream.h, and has include conio.h. Now first of all you have to write first base class, that is class student as per definition, which is I already explained. Now in that you have to take two protected data member, roll number and name, right? And
public member function, two public member function, void get data that accept the value of roll number and name, and void put data that display the value of roll number and नेम, राइट। यहाँ पे कोई क्लास से डिराइव नहीं होता स्टूडेंट क्लास एक्ट एज एन बेस क्लास, सो यहाँ पे कोई डेरिवेशन नहीं होगा, डायरेक्टली क्लास एंड देन मेथड। नाउ वी कैन राइट मेथड आउट ऑफ द क्लास और हियर ऑल्सो, बट we write that out of the class later. Here first write derived class score. Now in that write protected member function, integer mark 1 and integer mark 2. Now and public member function like void get mark that accept mark 1 mark 2 and void put mark that display both the mark, right? Now later on rewrite the definition of both the function, but here class score is derived from class student, so we have to write colon then visibility modifier. For example हम ज़्यादातर पब्लिकली ही डिराइव करेंगे एंड बेस क्लास नेम कौन सा है स्टूडेंट, ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिराइव अप्लाई किया है। नाउ हमें दूसरा बेस क्लास जो है वो लिखना है, दैट इज क्लास स्पोर्ट क्लास, ठीक है। इन दैट हमें प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर लेना है, सिर्फ एक ही डेटा मेंबर प्रोटेक्टेड है उसमें, लाइक इंटीजर सब, ठीक है। और पब्लिक मेंबर फंक्शन है, जैसे कि हमने void get mark put mark लिया, ऐसे ही void get sport that accept the subject and void put sport which is used to display the value of subject, ठीक है। नाउ स्पोर्ट क्लास जो है यहाँ पे बेस क्लास है, तो वो डिराइव कहीं से भी नहीं होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, राइट। सो अब हम डेरिवेशन लास्ट चाइल्ड क्लास हम लिख रहे हैं, लाइक रिजल्ट, बट दिस क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम स्कोर क्लास एंड स्पोर्ट क्लास। तो पब्लिकली हम डिराइव करते हैं स्कोर क्लास, तो यहाँ पे बेस क्लास नेम लिखते हैं स्कोर, एंड देन कॉमा करके दूसरा बेस क्लास वो भी हमें पब्लिकली डिराइव कर रहे हैं, तो हम लिखते हैं पब्लिक एंड क्लास नेम इज स्पोर्ट, राइट। दोनों क्लास लिखा हमने, ठीक है, डिराइव किया, दोनों क्लास पे से डिराइव किया हमने। नाउ हियर रीराइट प्राइवेट डेटा मेंबर, लाइक कौन कौन से प्राइवेट मेंबर थे, इंटीजर टोटल एंड फ्लोट परसेंटेज, ठीक है। एंड इन दैट पब्लिक मेंबर फंक्शन सिर्फ एक ही था, लाइक डिस्प्ले, जो टोटल परसेंटेज डिस्प्ले करेगा, ठीक है। इतना हमें क्लास डिराइव करना है। अब हमें क्या करना है, डिस्प्ले फंक्शन, गेट स्पोर्ट, पुट स्पोर्ट, गेट मार्क, पुट मार्क, देन गेट डेटा, पुट डेटा, सभी फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। तो हम एंड में भी लिख सकते हैं या तो फिर यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लाइक हमें लिखना है पहले रिटर्न टाइप, देन क्लास नेम विथ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, राइट, एंड देन फंक्शन नेम, ओके। नाउ यहाँ पे हम सी इन सी आउट से भी लिख सकते हैं, लाइक इन दिस वे, राइट। So in this way we can accept the value of roll number and name, and we can write another function put data, then class name with scope resolution operator and put data, ठीक है। Now we can write the definition of put data in this way, like सी आउट में हमें डिस्प्ले लिखना है, सी आउट में ही हमें डिस्प्ले करना है। So सी आउट roll number equal to RNO, and in this manner we can also display name, okay। now हमने स्टूडेंट क्लास के दोनों फंक्शन लिख लिए हैं। अब गेट मार्क पुट मार्क लिखने हैं, वो भी हम यहीं पे लिख देते हैं स्कोर क्लास के नीचे, ठीक है। सेम डेफिनेशन हमें लिखनी है, void
then class name is score with scope resolution operator and function name get mark. in that same हमने जैसा get data में लिखा है cout cin से हमें value accept करनी है. So in this way we can accept the value of mark 1 and mark 2. and another method पुट मार्क लिखेंगे तो वो भी स्कोर क्लास की है, तो स्कोर देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर पुट मार्क एंड सी आउट यूज़ करके हम उसको डिस्प्ले करते हैं. लाइक सो इन दिस वे वी कैन डिस्प्ले द mark 1 and mark 2. नाउ लेट अस राइट द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट क्लास. सेम हम यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लिख ही देंगे लाइक void sport class scope resolution operator get sport method. यहाँ पे हम सी आउट सीन करके वैल्यू जो है वो एक्सेप्ट करेंगे लाइक दिस. in this way we can enter value of sub variable and we can also write put sport. like in that आपको सिर्फ सी आउट से डिस्प्ले करना है, राइट. ओके, सो लास्ट क्लास हमें डिस्प्ले लिखना है. सो void क्लास नेम result scope resolution operator and display. नाउ डिस्प्ले में हमें क्या करना है, पहले तो हमें टोटल लिखना है, ठीक है. टोटल लिखेंगे, टोटल इक्वल टू mark 1 प्लस mark 2 प्लस सब, ठीक है, और परसेंटेज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय टोटल डिवाइड बाय 3, ठीक है. तो सी आउट में हम डिस्प्ले करेंगे टोटल इक्वल टू एंड देन टोटल, ठीक है, टोटल वेरिएबल. एंड इन नेक्स्ट लाइन क्या डिस्प्ले करेंगे हम, सी आउट परसेंटेज इक्वल टू, क्या डिस्प्ले करेंगे हम, परसेंटेज, ठीक है. बिफोर दैट वी कैन ऑल्सो डिस्प्ले, यहाँ पे हम कॉल कर सकते हैं सारी मेथड. लाइक यहाँ पे डिस्प्ले करना है रोल नंबर तो हम पुट डेटा रोल नंबर एंड नेम डिस्प्ले होंगे. फिर मार्क्स करना है तो पुट मार्क, तो दोनों मार्क डिस्प्ले होंगे. और स्पोर्ट के मार्क्स भी डिस्प्ले करना है तो पुट स्पोर्ट, वो भी डिस्प्ले होंगे, ठीक है. हम एंड में भी कॉल कर सकते हैं, सॉरी ये जो है 3 फंक्शन वो हम void मेन में भी कॉल कर सकते हैं और यहाँ पे भी हमने कॉल कर सकते हैं. 2 में से कोई भी एक मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, या तो मेन में करो या डिस्प्ले में कर दो, ठीक है. नाउ लेट अस राइट द स्ट्रक्चर ऑफ इंटीजर मेन. नाउ अब हमें कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है. तो चाइल्ड क्लास हमारा कौन सा है, रिजल्ट का फॉर एग्जांपल हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. सो पहले हमें स्टूडेंट की डिटेल चाहिए तो हमें लिखना है फंक्शन कॉल करना है ob.getData. फिर हमें mark 1 mark 2 चाहिए तो हमें फंक्शन नेम लिखना है get mark, ठीक है. फिर हमें सब्जेक्ट चाहिए तो get sport एंड सारी डिटेल और मार्क जो है हमने इनपुट कर दिए हैं. अब हमें रिजल्ट डिस्प्ले होना चाहिए तो ob.display, राइट. अगर हमने डिस्प्ले में 3 मेथड नहीं लिखी होती, पुट डेटा, पुट मार्क एंड पुट स्पोर्ट, तो हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं लाइक ob.putData, ob.putMark एंड ob.putSport, ठीक है. तो हमें यहाँ से कमेंट, यहाँ पे ये 3 मेथड जो है निकाल देनी है, ठीक है. या तो फिर वहाँ पे लिखते हो तो यहाँ पे कमेंट में रख देनी है, ठीक है. डिस्प्ले में तीनों मेथड आ ही जाएगी. तो हमने पूरा क्या कॉल कर दिया है, डिस्प्ले कर दिया है, राइट. सो नाउ लेट अस कंपाइल इट, 0 एरर. Now let us run it. Enter roll number 1, name ABC, mark 1 for example 70, mark 2 80 and subject के marks है 90. तो रोल नंबर 1 नेम ABC, मार्क 70 80 90 डिस्प्ले होते हैं.
तीनों का टोटल 240 एंड परसेंटेज कितने परसेंटेज आए हैं हमारे 80% आए हैं। ठीक है, क्लियर। सो इन दिस वे वी कैन राइट हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सो I hope you understand that program of hybrid inheritance, and if you have any query regarding this program then you can message me. Thank you.